with a very, very vibrant and very, very talented young uh, entrepreneur. And before I start and introduce about our speaker today, I'll say graphic designing, which is the subject for today. That's how to do, how to reach logo se logo tak. That's the logo of our speaker. So it's going to be a 3-day workshop on graphic designing. Day one, introduction, application, and career opportunities for you all. Now, let me introduce our vibrant speaker and welcome you to this handsome boy sitting next to me. It's Vivek. Vivek is a problem solving designer and a creative entrepreneur. He started his entrepreneurial journey at the age of 17. Yes, very young age of 17, with merchandising and branding space. Today, when he's at 25, he has worked with brands like ICICI Foundations to promising startups like Earring. He has transformed more than 100 businesses to brands. And his own startup, Vgyapun, an online education platform is making for creatives and entrepreneurs in training hundreds of students pan India since lockdown 2020, with a mission of people to uh, give them a power to build better brands. Plus his I'll say a logo, or his name known as Mr. Brand India 21, and his logo se logo tak initiative. That's something we really need to know a lot about. So what is this logo se logo tak? Yeah, so ये बहुत simple answer है इसका. Like I'll keep it very informal. So people feel that designing or graphic designing is all about making some colors या fonts उससे खेल लिया and एक logo बना लिया तो आपकी brand बन गई. But that is not the case. So a designer has a power to make any product or service reach its target audience. मतलब एक डिजाइनर अपनी स्किल्स से एक ब्रांड बना सकता है. एंड ब्रांडिंग, लाइक designing and logo is not about, like, building a brand is not just about making a logo. It's more than that, and we need India to produce brands and not just another businesses. So thus under this logo से logo तक, मतलब logo से आप अपने target audience तक कैसे पहुंच पाते हो, वो हम सफर हमने शुरू किया है. So And see, so bad of me. I was so excited with this logo se logo tak that I missed even welcoming yeah, Vivek. Vivek, we welcome you here on Creative Warrior programs. thank you. And Yeah. it's the session is all yours, and I apologize for that because I was so excited. I started with the question immediately. So let's start. It's you have the rights to share your screen. Plus, Vivek told me he wanted to be an interactive session. So Yeah. you guys can chat, you guys can talk. Even if you want to talk, you can write it in the message that you want to talk to him, and you can raise your hand. Just We'll allow you to talk. help me out with the queries in the chat box and somebody who wants to talk, so that, like, if I'm in my flow, just help me out so that I can address the queries. Yeah, what we'll do, or maybe at the end of the session, last 10 minutes, 12 minutes, we can talk. Otherwise, even when you are giving a presentation and somebody wants to give a comment or a message, they can send it in the chat. That will be better. Yeah. Okay, great. Awesome. So let's go. Yeah, sure. So firstly, I thank Vidyadan for such an amazing opportunity, and this is much needed. Yeah, matlab, guys, don't expect me to be so formal. Yeah, I won't bore you. Don't worry. And सबसे पहले, I hope everyone is safe, sound at home, and सब ठीक चल रहा है, because given the scenario right now, I hope everything is fine. Just type Y in the chat box if all are excited for this session, and I can see some energy in the room. Just type Y in the chat box. Like, हम screen से बातें कर करके थक गए यार, मतलब this यही हम खुद से बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है. So I just requested that let's this session be energetic and take the most of it. Yeah, I mean, it's a very
if for to begin with, if you are a layman, if you don't know anything about design, आपको sketching नहीं आती, ये सब आप कोई चिंता मत करो. Like this is a very 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 introductory session for those who wants to understand कि graphic design है क्या. सबसे पहले तो बहुत introductory और simple language में I have kept this, no jargons, and this will be a mix of Hindi plus English so that आप सभी लोग सही तरह समझ पाओगे. All right, amazing man, amazing. I can see so many why in the chat box. Great. So graphic design is all about why, to be very honest. WHY, why? Like why are you doing what are you doing? So great. I'm excited to begin now. I'll quickly, and thanks for such a wonderful introduction, ma'am. I mean, means a lot. It's just like सफर लोगों से लोगों तक का अभी शुरू ही किया है, आज भी हम सीख ही रहे हैं. It's a dynamic industry. You have to keep learning every day, and you can never say that you know it all. All right, amazing, amazing. So here we begin. What do you guys see on screen? मतलब ये आपको, I'll just ask some question. ये क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे screen में? If you guys can just quickly type in the chat box. I'll just try to see where are the answers coming in. What is graphic design? Okay, what is graphic design in different colors and fonts? Now I'll just quickly change my slides. Is this better readable or is this much better? मतलब पढ़ने के लिए. Like either this color one or this black one, the second one. Cool. Now I'll show you. Okay, black and white, black and white, black and white. Badhiya. Now I'll show you this. Now tell me amongst what is graphic design? What is graphic design? Okay. What is graphic design? The third one. I mean, the first, second, third. Vote. Like, what is graphic design? The third, yeah. मतलब ज़्यादा readable है, clear है, clean है, better है. थोड़ा clutter free है, अगर आप देख पा रहे हो तो. So what is, so yeah, everybody is 3. Fine, amazing. Now just to give you guys a quick heads up, अभी ये जो इतना messy है, आपको eye relaxing, yeah. So अभी ये जो third one है, what is graphic design, ये इतना beautiful आपको क्यों लग रहा है और क्यों ये सही तरह से लग रहा है? So every, like, a graphic design is an art or a craft of communicating or simplifying the communication. Rather, it is all about, ये काफी complex है, ये इसको better way में simplify किया गया है. Yeah, so alignment, color combination, वो सब it's too in detail. But abhi in a simple language, if somebody really asks, I don't want to go into those definitions, Google definitions. Simple and sweet, what is graphic design? Graphic design is an art, is a skill of simplifying a communication with your visual skills, with your visual design skills, right? Ab, what is this that you can see on the screen? Meanwhile, I'll also, like, we can also interact with the video if there's any query, but I'm just addressing that. So what do you guys see on the screen? Like, क्या दिख रही है अभी आपको? If you can just quickly type in the chat box, what do you see on the screen? Some sort of a painting? Some sort of a painting? Yeah? Yes? Okay. Flower painting, okay. So this is fine art, and it's fine. Fine art is fine, like nothing is wrong or right in art, but this is a subject in itself. But there is a huge difference between a fine art and graphic design. Like, so fine art, it's everything is fine. मतलब उसमें because of fine art, उसमें सब चलता है, उसमें आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी एक्सप्रेशन जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, उसका कोई पर्पस as such
डिपेंड करता है, ऐसा कोई कमर्शियल पर्पस नहीं होता है, ऐसा कोई कमर्शियल अप्लाइड पर्पस नहीं होता है व्हेन इट कम्स टू फाइन आर्ट और पेंटिंग। बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है अपने आप में, ये भी एक बड़ा डोमेन है। सो आई एम नॉट कंपेयरिंग बिटवीन फाइन आर्ट एंड अप्लाइड आर्ट एंड ग्राफिक डिजाइन। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये अपने आप में एक अलग डोमेन है जहां पे ऐसा कोई कमर्शियल एप्लीकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड compared I mean, and in our subject graphic design, what you can see on the screen now, you can see some layman written, मतलब एक layman को अगर अपना मैसेज अपनी टारगेट ऑडियंस को कम्युनिकेट करना है तो वो इस तरह करेगा, मतलब उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैनर में करेगा वो। बट जो ग्राफिक मैन है हमारा, लेमैन नहीं, और जो ग्राफिक मैन है जैसे द ग्राफिक मैन और द ग्राफिक डिजाइनर will simplify the communication, like the message that is to be delivered and the target audience. By layman I mean जो साधारण आदमी है, या जो एक जिसको नहीं आता, जिसको नहीं पता डिजाइन क्या है, ग्राफिक डिजाइन क्या है, a normal human. A normal human like me, a layman for graphic designs. And I'm the graphic man. Yes. So here comes the graphic man to simplify your message and make sure कि वो उसकी target audience तक पहुंचे। तो नाउ ये जो काम जो करता है वो होता है ग्राफिक डिजाइनर। हमारे जैसे लोग जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट को समझते हैं, सर्विस को समझते हैं, सामने वाले की प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, एंड उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करने वाली ऑडियंस कौन है। जैसे कि आप ये सेशन को एक एग्जांपल ले लो, लाइक मुझे एक मैसेज आप लोगों तक कन्वे करना है, मैं क्या यूज कर रहा हूँ अभी, ग्राफिक डिजाइन स्किल्स यूज कर रहा हूँ, कुछ आपको थोड़ी बहुत तो डिजाइन दिख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। सो दिस इज हाउ यू आर द टारगेट ऑडियंस, मतलब मुझे आप तक ये मैसेज पहुंचाना है, एंड मैं कितना सिंपली उस मैसेज को पहुंचा पा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ माई डिजाइन स्किल्स। सो प्रेजेंटेशन डिजाइन भी तो एक एप्लीकेशन हुआ ग्राफिक डिजाइन का। खैर एप्लीकेशन हम कल इन डेप्थ देखने वाले हैं, आज इट्स जस्ट आई वांट टू क्लियर द what is graphic design at fundamental level so that you have this clear in your head. No Google definitions, no big jargons. Simply एक मैसेज को अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने का काम एक ग्राफिक डिजाइनर करता है, और वो काम उसकी क्रिएटिविटी और विजुअल स्किल्स के थ्रू करता है। और जो वो कर पाता है ऑब्जेक्टिव ड्रिवन, लाइक यहाँ एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे ग्राफिक डिजाइन आपको सिखाना है, इंट्रोडक्शन देना है। यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव नेसेसरी नहीं होता है फाइन आर्ट में, आप आर्ट क्राफ्ट कैसे भी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। यहाँ यू आर गिवन अ टास्क, यू आर गिवन अ डेडलाइन कि मुझे इतने टाइम में ये चीज को यहाँ डिलीवर करना है। तो दिस इज हाउ यू रियली यू नो डू इट, and with the help of graphic design skills, and thus you become a graphic designer. So graphic design is all about simplifying communication. B, the one who does that is a graphic designer. The layman is the sadharan admi, and this graphic man is the superhero who has great powers. Abhi wo kaise aage karta hai, before I move ahead I would like to address some questions if there are any, so that we know we all are aligned. As I said, I won't talk to screen. So yeah, if there are any particular queries that I can address meanwhile, or if anybody wants to have a chat, quick one. Yes, a quick chat if you want. And I think abhi aa nahi raha, there is no question, so But yeah, clear. Yeah. so message deliver ho raha hai, matlab questions nahi aa rahe hain yani. I can see some people raising hands though. Let's see. Okay, let me see, guys. Who? Oh, the hand raiser. Okay, are you guys? Do you guys want to speak, or if you can type a little bit here in the chat window, that would be better. Anything's fine. Because it's a 3-day workshop. We have ample of time to chat and talk. I'll give high fives though for those who are raising hands. If possible. Yeah. Alright, okay. Sure, definitely.
team will help you with that. Yes, Anil Gagan, if you're facing a problem, it's there on our YouTube channel also. Graphic means Neha Verma, Neha Singh. Sure. So graphic, what does a graphic really mean? So graphic is the elements or the design elements. It's composed of various design elements. Like it's too in depth, like, but still as of now, अगर आप यहाँ पे ये जो अभी जो ये जो एक डिजाइन देख पा रहे हो स्क्रीन पे, like what is graphic design? It's composed of a shape, it's composed of a font. So that is like a graphic element. It's composed of various shape, fonts and colors जो हम आगे और in depth इसमें देखेंगे. So graphic design, we can make a 3D model like So Sorry Nastic channel. That is 3D. That is a 3D design. So Sorry जो है वो अलग एक craft है. So that is all about how are you able to develop something in 3D, which is different softwares हैं like this 3ds Max and Maya and modeling, texturing, lighting. That is a different subject. Graphic design is 2D, मतलब फ्लैट सरफेस, इसमें 3D एज सच नहीं होता. हाँ, मैं हिंदी में ही जा रहा हूँ, तो एक बार क्विक रिकैप करके मैं आगे बढ़ता हूँ. व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन? ग्राफिक डिजाइन एक ऐसा क्राफ्ट है जो आपको एक मैसेज को सिंप्लीफाई करने के लिए हेल्प करता है विजुअली, और जो वो काम करता है वो है एक ग्राफिक डिजाइनर. एंड वो ग्राफिक डिजाइनर ऑब्जेक्टिव ड्रिवन काम करता है. yes, absolutely. एंड जो फाइन आर्ट है वो अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है. वहां कोई पर्पस एज सच नहीं होता, कमर्शियल पर्पस. यहाँ पे हम कमर्शियल काम करते हैं. मैं अभी जिस डोमेन की बात कर रहा हूँ एज ए ग्राफिक डिजाइन, मैं स्पेसिफिक टू अप्लाइड आर्ट या कमर्शियल आर्ट की बात कर रहा हूँ, जहां पे आपको इस काम को करने के लिए पैसे भी दिए जाते हैं, प्लस डेडलाइंस भी दी जाती हैं, और उस डेडलाइन और उस बजट में आपको ये काम अचीव करना होता है. thus you are using your craft for your brands or businesses benefit. Now how do we do that? So it's all about getting in a good shape first. So first we have to get in a good shape. अभी लॉकडाउन में सारे बैड शेप में हो गए, तो first let's get in a good shape. What is this all about? So graphic is made up of shapes, जैसे triangle है, circle है, square है. You will see that any design that you see at the base level has these shapes, right? So triangle जो है कहीं ना कहीं आपको एक एनर्जी की तरफ डायरेक्शन देगा. मतलब अगर आप ट्राइंगल को देखो, it gives you a direction. Either it goes on it goes to top, either this direction, that direction. So triangle is too mobile, too agile, जैसे कि बहुत ही एनर्जी की तरफ या मोबिलिटी की तरफ एक वो फील देता है. सर्कल जो है, जैसे आप बीच में देख पा रहे हो, सर्कल बहुत अप्रोचेबल होता है. कोई भी बबली या एकदम हैप्पी गो लकी, एक सर्कल इज वेरी अप्रोचेबल एज अ शेप, मतलब बहुत फन है, क्यूट है. स्क्वायर एकदम सॉलिड है. स्क्वायर इज फॉर फाउंडेशंस, फॉर स्ट्रेंथ, फॉर सॉलिडिटी. दैट इज स्क्वायर ऑल अबाउट. Right, I'm getting questions on color as well. I'll address that. Yeah, thanks Mahesh. Yeah, I mean absolutely you are right. Great है, मतलब लोग जागृत हैं यहाँ पे, एनर्जी मेंटेन है, बढ़िया. So let's get in a good shape first. So आपके पास एक ब्लैंक कैनवास होता है. It's like what? Like a blank canvas, nothing here. अब आप इस स्पेस में कैसे आर्ट डेवलप कर रहे हो? So आप शेप्स से स्टार्ट करो, getting in a good shape, adding right colors to our lives. Now it's all about right colors. पहले तो शेप आ गए, देन हम कलर्स की बात कर रहे हैं. कलर्स में यू हैव दिस वार्म कलर्स एंड कूल कलर्स. एक कलर्स जो एकदम वार्म होते हैं, वार्म मतलब जो ऑरेंज है, रेड है, येलो है, वो वार्म कलर स्कीम की तरफ जाता है. मतलब anything which is like if you see a sun, or that is towards warm यानी सब हॉट कलर्स हैं. और ब्लू की तरफ जो है वो सारे कूल कलर्स होते हैं. जितने भी ब्लू के डायरेक्शन में जाते हैं
वो एक कूल कलर्स हो गए, एंड वार्म कलर्स आर डिफरेंट, कूल कलर्स आर डिफरेंट, एंड ये दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट हैं या कॉम्प्लीमेंट करते हैं. सो दिस बोथ आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. मतलब orange and blue, if you see left or right, they are complementing. So first you have to get the shapes right, then you have to get the colors right, and then it's all about what is black. So black is a very controversial, it's my favorite color, but how do I put this, black or white को या ग्रे को हम लोग न्यूट्रल की तरह कंसिडर करते हैं, टू न्यूट्रलाइज एनीथिंग. मतलब ना ये बाजू ना ये बाजू, दैट इज न्यूट्रलाइजिंग. व्हाइट और ब्लैक को जब आप आगे एक्सप्लोर करोगे ये सब्जेक्ट, हम लोग उसे वैल्यूज में कंसिडर करते हैं. वैल्यूज, इट्स अ कलर, इट्स अल्टीमेटली ब्लैक और व्हाइट, इट्स अ कलर बट स्टिल कॉन्ट्रोवर्शियल. हम लोग इसको इसमें कंसिडर करते हैं लाइट वैल्यू, मतलब इसमें कितनी लाइट है. जब आप पता है मोबाइल में फोटोज एडिट करते हो तो एक टूवर्ड्स ब्लैक की तरफ जाओगे तो फोटो डार्क होते जाएगा, टूवर्ड्स व्हाइट की तरफ जाओगे तो फोटो ब्राइट होते जाएगा. तो ब्लैक और व्हाइट को कहीं ना कहीं हम लोग एक द अमाउंट ऑफ लाइट इन अ फोटो की तरह कंसिडर करते हैं. तो इट्स लाइक यू कॉल इट बट डोंट कॉम्प्लिकेट इट यार. मतलब ब्लैक भी एक कलर है, व्हाइट भी एक कलर है, ग्रे न्यूट्रल पर्पस के लिए है. अगर आपको और इन डेप्थ टेक्निकल लैंग्वेज बात करनी है तो यस, आप शायद उसे कलर ना भी कहो और ऐसे कह सकते हो कि जिधर ब्लैक ज्यादा हो रहा है वो फोटो या इमेजरी डार्कनेस की तरफ जा रही है, जहां व्हाइट ज्यादा हो रहा है वो ब्राइटनेस की तरफ जा रही है. सो इट्स लाइक दैट. Yeah, but still not considered a positive color. Absolutely, Aarti. But I hope like you all are in on same page with me. मतलब just type Y in the chat box अगर हम सही जा रहे हैं and सही interact कर पा रहे हैं. Okay, बढ़िया बढ़िया. So great, great. So yellow is in warm. किसने पूछा yellow? Yes, yellow goes in warm. Awesome. So अभी every color has its own emotion. जैसे if you see blue color has more of trust, कि जब blue color दिखता है तो एक हमें ज्यादा trust आता है. green color जब हमें दिखता है तो हमें उसमें life दिखती है, कि कितना ग्रीनरी जहां भी होगा वहां पे आपको एक लाइफ या एक ग्रोथ का एंगल दिखेगा. Orange is all about creativity and expressing yourself. Gray is all about neutrality. तो हर कलर की अपनी एक पहचान है और उस इमोशनली, मतलब इट इज ऑल इमोशनल, आपको पता नहीं होगा बट सबकॉन्शियसली आपको वो फीलिंग आएगी. रेड जो कलर है वो डेंजर का भी कलर है, एट द सेम टाइम इट्स अ कलर ऑफ लव एज वेल. सो every color, like yellow is a very happy color. Yellow is such a happy color कि आप yellow को देखोगे तो एक brightness and happiness आपको आ जाएगी. So every color has its own meaning. Like we can go in depth in that later. But it all starts with shape, getting in a good shape first. Then you put good colors, like add some colors in your life, and then what's your type? Please tell me what's your type. Yeah. So what's your type? बहुत simple है. Then आते हैं font. किस तरह आप font का usage कर रहे हो? You know, yeah, green is also associated with healing. Absolutely, because it's all about nature. And you consider brown is also all about earthy tones. So आप कुछ भी organic की तरफ जा रहे हो तो see, first you have to understand all this, then there are always rules which can be broken so in design, but make sure that the fundamentals जो आप अभी सीख रहे हो वो maintain रहे. So then आता है font. आप किस तरह अपने font का usage सही तरह से कर रहे हो, right? So I can see people raising hands. Just shoot your questions in the chat box. I'll be more than happy to address them. So you can see 3 types of font over here. ऊपर जो ये font हमने टाइप किया है ये है serif font. मतलब कहीं ना कहीं इसमें जो ये आपको edges में एक डांडी या जो एक extension दिख रहा है that is serif. ये fonts ज्यादातर आपको magazines या publications या formal purposes के लिए दिखेंगे. और बीच में जो ये फॉन्ट है ये है sans serif font. sans मतलब नहीं, ना, विदाउट serif, मतलब इसमें एक्सटेंशन दिख रहा है, इसमें एक्सटेंशन आपको नहीं दिख रहा है, you know.
सो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर इनफॉर्मल? ऐसा कोई स्टैंडर्ड एज सच नहीं है। आजकल तो सब जितने भी लोगोस बन रहे हैं वो ज्यादातर ये बीच में जो है सैंस सेरिफ, क्योंकि सैंस सेरिफ या विदाउट दैट डांडी इज मोर मॉडर्न, मोर क्लीन। आप ये देख लो, चाहे चाहे आप विद्यादान का एक जो लोगो है वो देख लो। सो बहुत क्लीन होता है वो, विजिबल होता है और मॉडर्न लगता है वो। एंड देन आता है स्क्रिप्ट, जो नीचे आप स्क्रिप्ट देख पा रहे हो, FONT। सो दैट इज स्क्रिप्ट या कर्सिव फॉन्ट, जो थोड़ा पर्सनलाइज्ड टच देता है किसी भी चीज को। तो यहाँ पे ना हर एलिमेंट, ये जो है चाहे शेप एक एलिमेंट हो, वो भी एक फीलिंग के साथ आ रहा है। मैं आप में ना हर चीज का वाई इनकलकेट करना चाहता हूँ। वाई? बिकॉज आप आज आप चाहे कोई डिजाइनर्स भी हैं रूम में, तो मैं ये चाहता हूं कि आप क्यों ट्रायंगल यूज कर रहे हो अपनी डिजाइन में। बिकॉज आप एनर्जी, डायरेक्शन या कुछ पर्पस, हर चीज का एक पर्पस होना चाहिए। ग्राफिक डिजाइन एज अ सब्जेक्ट में आप बिना पर्पस अगर कोई चीज कर रहे हो ना, तो आपकी डिजाइन उतनी निखर के नहीं आएगी। सर्कल बिकॉज वो अप्रोचेबल है, स्क्वायर बिकॉज वो सॉलिड है। मैं वार्म कलर्स इसके लिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक शाम दिखानी है जिसमें एक वार्म एनवायरनमेंट है एंड उसमें मुझे कुछ मैसेज कम्युनिकेट करना है। मैं कूल कलर्स इसलिए यूज कर रहा हूँ। So how do we decide which font to use? Absolutely. So I'll get on that. Then I come to font. तो मैं ये क्यों क्लीन मॉडर्न फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, मैं क्यों स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, मैं क्यों सेरिफ फॉन्ट यूज कर रहा हूँ? सो नाउ क्यों का आंसर है, इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क, कि आपको क्या काम दिया गया है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा काम दिया गया है जो किसी यू नो एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा इन डेप्थ जा रहा है ये क्वेश्चन, स्टिल मैं एड्रेस करने का ट्राई करता हूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दैट इन अ शॉर्ट टाइम, स्टिल आई विल ट्राई टू एड्रेस कि अगर आपको एक काम दिया गया है, एक स्टार्टअप आ रही है जो टेक सेगमेंट में काम कर रही है, कोई एक टेक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है एंड उसका एक लोगो हमें डेवलप करना है, तो आप उसके लिए स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज नहीं करोगे, क्योंकि वो स्क्रिप्ट फॉन्ट्स जो है काफी पर्सनलाइज्ड, जैसे आप वेडिंग में ऐसे फॉन्ट्स देखते हो, या स्क्रिप्ट आप ऐसी चीजों में देखते हो जो थोड़ा सा क्वर्की होता है, जो लास्ट में जिस तरह फॉन्ट लिखा है। बट अगर आप किसी सिंपल या मॉडर्न चीज को डिजाइन करना चाहते हो, तब आप सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज करते हो। मैं वही कहने की ट्राई कर रहा हूँ। एंड जब आप फॉर्मल फॉर्मल पर्पसेस, यानी अगर कोई फाइनेंस कंपनी है, अगर कोई लॉ लीगल फर्म है, अगर कोई ऐसा मीडिया का कोई पब्लिकेशन है, डिपेंड्स, तो उनमें ज्यादा ये सेरिफ फॉन्ट यूज हो रहा है। सो इन ऑर्डर टू डिसाइड विच फॉन्ट टू यूज, यू विल हैव टू सी के कौन सा सेक्टर है, कौन सा सेगमेंट है। अगेन, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, बट दीज आर नॉट रूल्स। मैं कोई रूल्स एज सच भी नहीं कह रहा, बट ये सब एक फीलिंग के बेसिस पे आपको डिजाइन करना पड़ेगा कि आपको मॉडर्निटी दिखानी है, कि आपको एक फॉर्मलाइजेशन दिखाना है, कम्युनिकेट क्या करना चाहते हो, अकॉर्डिंगली आप अपना फॉन्ट डिसाइड करो। सो या सो सॉलिड थिंग्स इज इक्वल टू सॉलिड फॉन्ट, एब्सोल्युटली, बिकॉज मैं उस मैसेज को उस तरह कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। तो आई कैन शो, या एब्सोल्युटली, टुमारो आई कैन एब्सोल्युटली शो दैट, आई हैव दैट विथ मी। बढ़िया। सो एप्लीकेशन में इसको और इन डेप्थ देखेंगे, बट आज बेस क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज आई सी मेनी इन द रूम आर स्टिल coping up with what is graphic all about, or what is graphic design all about. So let's build a good image. Now first you have to get in a good shape, number one. Then you have to add right colors in the lights. Then you have to make sure कि what's your type, कि क्या font आप use कर रहे हो, and then you have to build a good image. मतलब देन आता है इमेज, कि अभी आपका जो काम रहेगा वो इन्हीं एलिमेंट्स से रहेगा, और इन्हीं एलिमेंट्स से आपका एक ग्राफिक बनेगा। आपको एक ब्लैंक कैनवास दिया जाएगा, इट्स अ ब्लैंक कैनवास। अभी आप इसमें कलर, फॉन्ट, इमेज, किस तरह सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके, जैसे मेरा यहाँ पे आप एक स्लाइड देख रहे हो, ये स्लाइड भी एक ब्लैंक कैनवास है। इसमें आप देख रहे हो कि मैंने इमेज सेंटर में रखी है। इमेजिन करो मैं इमेज को कहीं ऊपर ही ले जाता, आपको दिखती ही नहीं। लेट्स बिल्ड अ गुड इमेज। मैंने भी एक फॉन्ट लिया हुआ है, नीचे एक शेप से मैंने उसको अंडरलाइन किया हुआ है, और इमेज को एक अलग से कलर दिया हुआ है, सो दैट वो आपको डिफरेंशिएट हो।
आपको पता चले हम इस स्लाइड में इमेज की बातें कर रहे हैं। तो आप देखोगे तो ग्राफिक्स हर जगह पे हैं। आप ये सेशन देख रहे हो, आपको यहाँ पे भी दिखेंगे। आप बटन आप जिधर देखो वहां पे आपको ग्राफिक्स दिखेंगे। इसके बिना कुछ बनता ही नहीं है। So, इतना इसका खपत है। तो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग श्योर के शेप, कलर्स, टाइप, इमेज जब कंबाइन होते हैं सही तरीके से, तब जाके एक प्रॉपर ग्राफिक बनता है, एक ग्राफिक आपका डेवलप होता है। एंड देन इस सबसे बड़ा सुपर पावर होता है ग्राफिक मैन का, एस्थेटिक्स। ये मैं इन शॉर्ट यहाँ पे एक बताना चाह रहा हूँ। सो एस्थेटिक या एस्थेटिक जैसे मैं कहता हूँ, सो एस्थेटिक यानी के आई डेवलपमेंट, हमारी ये जो आईज है इसमें बहुत पावर होता है। एंड अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे वो रेड एंड ब्लू वाला स्क्वायर देख पा रहे हो, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, क्या आपको वो बेटर लग रहा है या ग्रीन एंड ब्लू बेटर लग रहा है जो राइट हैंड साइड पे है? बाय डिफॉल्ट, मतलब आप ग्राफिक डिजाइनर हो नहीं हो, डजेंट मैटर। सो राइट वन इज ऑलवेज राइट। सो नाउ दिस आर जस्ट एस्थेटिक्स। सब ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन एंड ब्लू कह रहे हैं। बढ़िया 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 बढ़िया। सो नाउ ऑफ कोर्स सेकंड, नाउ ये क्यों सबको ग्रीन एंड ब्लू सही लगा? सो नाउ somebody who does not know, लेमन जो है हमारा, वो लेफ्ट वाला काम करेगा। उसको शायद पता नहीं होगा कि मुझे ब्लू और रेड यूज करना है या ब्लू और ग्रीन यूज करना है। ग्राफिक मैन जो है वो ग्रीन और ब्लू वाला काम करेगा, बिकॉज ही नोज द राइट कॉन्ट्रास्ट। Contrast is just one of a very small subject under aesthetics. It looks pleasing to the eye, absolutely. Why it looks pleasing to the eye? Because it has been given a right contrast. Okay, blue and green are properly contrasting each other. Contrast मतलब कि एक opposite या एक complement उसको कर रहा है। रेड और ब्लू दोनों ही वो डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों नॉर्थ साउथ की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, नॉर्थ नॉर्थ की तरह एक्ट कर रहा है। इसके लिए वो आंखों को इतना प्लीजिंग नहीं लग रहा। अभी ये एस्थेटिक ठीक होने चाहिए आपके। सो सबको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आने चाहिए ग्राफिक डिजाइन सीखने के लिए, मुझे हार्डकोर स्केचिंग आनी चाहिए। नो डाउट स्केचिंग इज इम्पोर्टेंट। अगर आप अपनी आइडियाज को पेपर पेन पे उतार पाते हो, पेपर पेंसिल से आप उसको एक्सप्रेस कर पाते हो, नथिंग लाइक इट, दैट्स वेयर यू बिगिन। या एटलीस्ट थंबनेलिंग कर पाते हो। थंबनेलिंग मतलब कि नॉट नेसेसरीली आप एक कुछ बड़ा ऐसा डिटेल में स्केच बना रहे हो, बट क्विक स्क्रिबल्स भी आप कर रहे हो जस्ट अपनी आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए, नथिंग लाइक इट, बहुत बढ़िया। एंड आप प्लीज पेपर पेन या पेपर पेंसिल की आदत डाल लो। सॉफ्टवेयर ये सब ऑनलाइन नोट्स ये सब ठीक है, बट if you really wanna be someone जो क्रिएटिवली एक्सप्रेसिव हो, पेपर पेन पे आज भी सारे हम लोग पेपर पेंसिल पे सब आइडिया स्क्रिबलिंग सब वही करते हैं। एंड देन जाके हम लोग हमारे सिस्टम्स पे बैठते हैं या सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। तो एनीवेज जस्ट ब्रदरली एडवाइस यू कैन से। बट या सो एस्थेटिक में जो ये हमने कॉन्ट्रास्ट अभी कवर करा है, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है अंडर दिस बिग एस्थेटिक्स अम्ब्रेला। बट एज यू गाइस कैन अंडरस्टैंड के एवरीथिंग इज अ सेशन इन इटसेल्फ। बट या आपको इतना पता चल गया है अब कि मुझे शेप सही यूज करना है, मुझे कलर सही यूज करना है, मुझे फॉन्ट सही यूज करना है, इमेज की यूसेज मुझे सही करनी है। यहाँ पे मैंने ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे ही एक जस्ट इसका कोई पर्पस एज सच मुझे प्लीजिंग चाहिए था, मुझे और कलर्स ऐड नहीं करने थे। बिकॉज जितने ज्यादा कलर्स आप देखोगे ना उतना आपको इरिटेट होगा। अभी देखो इसमें जितने ज्यादा आप कलर्स देख रहे हो उतना आपको एक इरिटेशन आएगा। जितने आप कम कलर्स देखोगे, व्हाइट ब्लैक ब्लू ग्रीन, मतलब 3 कलर्स 2 कलर्स, ज्यादा कलर्स का यूसेज विल ऑल्सो बी डिस्टर्बिंग टू योर आईज। तो इसलिए मैंने एक जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट इमेज अभी यहाँ पे रखी है टू बी सूदिंग। एंड देन एस्थेटिक अपने ठीक करने बहुत जरूरी है। ये हमारा सबसे बड़ा सुपर पावर है इन आवर आईज। एंड जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं ये सारा अचीव करने के लिए, वो होता है अडोबी फोटोशॉप, विच यू कैन सी ऑन द लेफ्ट PS, and on the right you can see Adobe Illustrator. So Adobe Photoshop जो एक सॉफ्टवेयर है वो एडिटिंग या इमेजरी पर्पस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है, जिसे हम कहते हैं रैस्टर। रैस्टर यानी अगर आप कोई भी चीज देखोगे तो रैस्टर
इज समथिंग जिसमें पिक्सल्स हो. पिक्सल्स यानी अगर आप चलो मैं एक फोटो जो यहाँ पे है इसको जूम करने का ट्राई करता हूँ, तो धीरे धीरे ये पिक्सलेट होते जाएगा. मतलब आप कोई भी फोटो देख लो, आप अगर उसको एक हद से बार जूम करोगे तो वो पिक्सलेट होते जाता है. आपको पिक्सल्स दिख रहे होंगे यहाँ पे अभी. सो कैन यू सी द पिक्सल्स? सो ये कहीं ना कहीं अभी ये पिक्सलेट हो रहा है. एंड जितना भी हाई रेजोल्यूशन इमेज हो, ये ऐसा नहीं है कि ये लो रेजोल्यूशन है इसलिए पिक्सलेट हो रहा है. बट व्हेन यू कम टू एनीथिंग विच इज नाउ, Photoshop is for raster purposes. Raster is pixels. Illustrator is for vector purposes. Vector मतलब के ये देखो, ये आपको ग्राफिक जो है मैं कितना भी जूम कर रहा हूँ आपको पिक्सल्स दिख ही नहीं रहे. कैन यू गाइस सी द पिक्सल्स? कैन यू सी इट्स शार्प? जस्ट टाइप S in the chat box if you can see the sharp. That yes, it's sharp because this is vector. Vectors are sharp. They never have pixels. They are not combined. They are not made up of pixels. एकदम sharp है. And print purposes के लिए जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, आपका 80% काम सब वेक्टर पे होगा, 20% काम आपका रास्टर या इमेजरी पे होगा. बिकॉज आप आज जितने भी लोगोज देख रहे हो, जितने भी डिजाइन्स देख रहे हो जो डेवलप हो रही हैं, सब अडोबी इलस्ट्रेटर में डेवलप हो रही है. कुछ लोग कहेंगे अडोब एक कोरल ड्रॉ करके भी एक सॉफ्टवेयर होता है, वो भी बहुत बढ़िया है. सो वी आर नॉट प्रमोटिंग सॉफ्टवेयर हियर, वी आर जस्ट गिविंग यू अ हेड्स अप के ठीक है कोरल ड्रॉ भी उसमें ही उतना साउंड सॉफ्टवेयर है. बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ज्यादातर लोग आज अडोबी इलस्ट्रेटर यूज करते हैं. एक सिर्फ है कि इंडिया में आज भी जो प्रिंटर्स होते हैं या जो फाइनल प्रिंटिंग का काम करते हैं, उन लोग आज भी कोरल ड्रॉ को प्रेफर करते हैं. बट या एनीवेज, तो आपको ये लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं, अडोबी इलस्ट्रेटर एंड अडोबी फोटोशॉप. फोटोशॉप में आप एडिटिंग, इमेज एडिटिंग, उसका इमेज को करेक्ट करना, कलर को उसके करेक्ट करना इमेज के, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू विद इमेजरी, यू कैन यूज अडोबी फोटोशॉप. फोटोशॉप में नहीं, मतलब पब्लिक लोगोस बनाती है, बट आई डोंट suggest that. Are you guys with me? Just type Y in the chat box if you can hear my audio, hear my video, like see my video. बढ़िया बढ़िया, great. So आज बहुत वाई हो गया यार सेशन में. Still I'm excited that you all are with me. Okay, so Photoshop is all about raster, and आपको जितना भी इमेज एडिटिंग, कलर करेक्शन, इमेज को बेहतर करना करंट सिचुएशन से, वो आप फोटोशॉप में करोगे. इलस्ट्रेटर में आप पूरा वेक्टर डिजाइनिंग का काम करोगे. यस, सो मैनिपुलेशन करना है तो आप फोटोशॉप में कर सकते हो. So yeah, somebody really typed that in the chat box. But yeah, manipulating the image, and Illustrator is all about designing this. जैसे मैंने ये जो presentation design किया है, ये Illustrator के इससे help से मैंने एक बार बस elements कुछ डाले. बहुत clean रखिए so that you understand. And आप आज किसी भी डिजाइनर से पूछ लो, वो ये चीज को बिल्कुल मानेगा, which is PS I love you. मतलब यही दो सॉफ्टवेयर हैं जो हमारी जिंदगी होते हैं, एंड इन्हीं दो सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम लोग सारे ग्राफिक्स जो हैं, आप PS I love you and I love you all for the energy. तो आप इसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से ये आप डिजाइन वर्ल्ड पूरा डोमिनेट कर पाओगे. तो ग्राफिक मैन एक ऐसा सुपर हीरो है जो ये एलिमेंट्स की मदद से ग्राफिक डिजाइन करता है. एस्थेटिक उसके पास बहुत बड़ा सुपर पावर है. अच्छे डिजाइनर्स, अच्छे ग्राफिक मैन के पास यही एक सुपर पावर होता है. एंड ये दो हथियार होते हैं, फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर, जिससे वो सबकी कॉमन मैन की प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है. बट एट द सेम टाइम आई वांट टू टेल यू वन थिंग, आपका ज्यादा फोकस जो है एस्थेटिक्स में होना चाहिए कि आपकी आई डेवलपमेंट कितनी है. मतलब इट्स नॉट अबाउट AI, अडोबी इलस्ट्रेटर, इट्स ऑल अबाउट आई डेवलपमेंट पे आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा. आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर्स में ट्रेन होना बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए, बट सो दैट आप स्ट्रगल ना करो जब आप ग्राफिक्स डिजाइन कर रहे हो.
कल हम इसके और एप्लीकेशंस इन डेप्थ देखेंगे, बट आज मैं इतना कहना चाहता हूँ कि whenever in your life आप जितनी एस्थेटिक्स में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कॉन्ट्रास्ट है, जैसे लाइन फॉर्म शेप, किस तरह एस्थेटिक्स मींस, जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का एक एग्जांपल दिया, सुंदरता, एस्थेटिक मतलब सुंदरता। वो सुंदरता कैसे आती है? सुंदरता आती है कुछ पावर्स को यूज करके। जैसे हमने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का पावर देखा कि अगर आप कॉन्ट्रास्ट सही यूज नहीं करोगे तो वो चीज सुंदर नहीं लगेगी। लेफ्ट वाली चीज रेड और ब्लू सुंदर नहीं लग रही है, राइट वाली चीज ग्रीन और ब्लू सुंदर लग रही है, तो उसके पीछे कुछ तो रीजन है, वो रीजन है कॉन्ट्रास्ट। वो कॉन्ट्रास्ट की नॉलेज होना इज एस्थेटिक। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कॉन्ट्रास्ट एक छोटा सा पार्ट है, सिमिलरली बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो स्पेस, प्रपोर्शन, काफी चीजों का ध्यान देना होता है, तब जाके आपका ग्राफिक एस्थेटिकली साउंड बनेगा, और वही आपको अचीव करना है। बाकी तो आज कितने टूल्स आ गए हैं, आज आज हमारा लेमैन भी खुद से डिजाइन कर पाए उसके लिए भी एप्स आ गए हैं, कैनवा जैसे एप्स आ गए हैं जो उन्हें भी एम्पावर कर रहे हैं, अच्छी बात है। बट अगर आपको ये स्टिल लेमैन को अगर इस चीजों की नॉलेज नहीं होगी ना, तो उस टूल्स को भी वो कैसे यूज करेगा उसे वो पता नहीं चलेगा। So yeah, even in fashion designing, yes, the fundamentals still remain the same. Like I can't comment much on the fashion part. All I can comment is on the merchandise, as we have developed some streetwears and hoodies and whatnot, such merchandise in our companies. And yes, the fundamentals remain the same. So be it that as well. But fashion again is a different subject altogether. So I'm open to more questions so that I can address your questions now. Like for introduction, I'll just quickly summarize everything. So graphic design is an art of simplifying a communication through visual design and language. मतलब आपको किसी का मैसेज किसी तक पहुंचाना है अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, वो आप कैसे कर रहे हो वो आपकी स्किल है। साधारण आदमी उसको कॉम्प्लिकेटेड मैनर में पहुंचाएगा, ग्राफिक मैन उसको बहुत सिंपली पहुंचाएगा। एंड बट इसमें पता होना चाहिए आपको कि मैसेज क्या है और ऑडियंस कौन है। अभी आज मुझे पता है कि मेरा मैसेज क्या है और ऑडियंस कौन है, अगर मैं यहाँ पे यूआई यूएक्स की ऑल ऑफ अ सडन बातें नहीं कर रहा। सो यही सब स्किल्स मैं आप में इनकलकेट करना चाहता हूँ। देन शेप को यूज करके, कलर्स को यूज करके, टाइप एंड फॉन्ट को यूज करके एंड इमेज को यूज करके आपको एक डिजाइन डेवलप करनी होती है। एंड इन सब एलिमेंट्स को सही तरह यूज करने के लिए आपको एस्थेटिक पावर्स लगेंगे कि जैसे हमने कॉन्ट्रास्ट अभी स्टडी किया जो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था जो सारे यहाँ पे समझ पा रहे हैं, जो आज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं ग्राफिक डिजाइन से, उनके लिए भी मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना चाहता। एंड कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, हमारा काम ही सिंप्लीफाई करना है। देन अडोबी फोटोशॉप, अडोबी इलस्ट्रेटर, दो टूल्स हैं जो आप यूज करके ये सब डेवलप कर सकते हो। दोनों इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स हैं, आपको सीखने बहुत जरूरी है। बट सॉफ्टवेयर से ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स जरूरत है जो अभी हम बातें कर रहे थे। एंड फोटोशॉप आप रेस्टर इमेज या मैनिपुलेशन पर्पस के लिए यूज करते हो। इलस्ट्रेटर जो है वो आप वेक्टर, या जो आपने देखा कि ये मतलब पिक्सल हो ही नहीं रहा है इसमें, वो मैं जूम कर रहा हूँ इसलिए पिक्सल आ रहा है, वरना वो पिक्सलेटेड नहीं होता है। एंड देन आप देख पा रहे हो कि इमेज जो है ये हमारी पिक्सलेट हो रही है। सो रेस्टर वेक्टर में भी आपने थोड़ा सा फर्क आज समझ लिया ये इंट्रोडक्शन सेशन में। एंड दैट्स इट। लाइक PS, I love you. I would love to address your queries now. I hope ज़्यादा यार Okay, मतलब, so yeah, it was not so heavy or something like that. Yeah. so from a layman, I'm also turning to a little power of a designer. I'm getting the powers. Cheers. Great. So, guys, you can send in your questions. You can raise your hand. Do we get free version of Adobe Photoshop and Illustrator? And is Android better or iOS better? This is a question from, let me see the name. Perfect. So Shreya, I guess. Shreya. Yeah. So the companies do provide free trial version, but then you have to purchase that license from Adobe company, Adobe Photoshop and Adobe Illustrator both. And these are for system purposes. मतलब आप Windows या जो भी आप यूज कर रहे हो, Windows यूज कर रहे हो, Mac आपका iOS यूज कर रहे हो, दोनों में आप कर सकते हो इसको यूज। ये मोबाइल पर्पस के लिए नहीं है, दिस इज ऑन सिस्टम, PC, विंडो या मैकबुक या
whatever you might be using. All right. Jamil is asking, how can we get a job after completing graphic designing course? बढ़िया. So see, it is a skill, and ये skill ऐसी skill है जो आज day in day out लग रही है. हर किसी को इस चीज की जरूरत है. On third session आपको मैं in depth इस पे बता पाऊंगा, but आज एक इतना कह सकता हूँ कि आप इसमें independently भी काम कर सकते हो. Plus आप, you just need your Wi-Fi, your laptop, and you are sorted. You can be independent as a designer and take projects from clients. Yeah, you can apply to ad agencies, to brands जिसको graphic designers की जरूरत होती है, and they hire you first as an intern, because I believe a lot in internships. आप internships में industry के पैरामीटर्स को समझते हो. उसमें आपको अभी आपने स्किल तो सीख ली, और उस स्किल को कैसे अप्लाई करोगे, डेडलाइन में कैसे डिलीवर करोगे, टीम में कैसे काम करोगे, अपनी डिजाइन को अगर कोई रिजेक्ट कर रहा है तो कैसे आप नई आइडियाज डेवलप कर रहे हो, ये सब चीजें आप अपनी इंटर्नशिप में बहुत बढ़िया सीखोगे. सो प्लीज पहले इंटर्नशिप करो. अगर आप किसी ब्रांड के साथ काम करना चाह रहे हो, या अगर आप किसी एजेंसी यानी जैसे मैं हूँ, मेरी 5 लोगों की टीम है, मेरी एक एजेंसी है, हम लोग बिजनेसेस को ब्रांड्स में कन्वर्ट करते हैं. तो हम इंटर्न्स लेते हैं, इंटर्न्स को भी ट्रेन करते हैं, जिससे फिर वो काबिल बने एज अ गुड डिजाइनर, एंड देन उनकी जर्नी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में भी कंसिडर करते हैं. सो दिस इज हाउ यू बिगिन. I would suggest internships for everyone. I mean, Okay. that's how even I Now, started. Everyone should start. Yeah. I have one suggestion, guys. Please send in the questions in the Q&A section, because chat window mein I'm gonna miss out on your questions. So let me take this one. How is the future of graphic design field for mass media professionals? This is a question from Sujata. She's assistant professor, Department of Mass Communication and Journalism, AMS College, Hyderabad. Hi Sujata, firstly glad to connect. And the future of graphic design field, now you see, for mass media professionals, it's immense. The future is immense, because since last 3 to 4 years, you see social media booming up so much. Everything is getting virtual. I mean, unfortunately, rather, due to this pandemic, but now it's all virtual, and things like designers are on the forefront. क्योंकि उनके बिना you cannot design a social media post, you cannot do anything. Like you cannot even design a good website, an app, and everything is getting online. E-commerce has boomed up. So now somebody is also skeptical के अभी इतने सारे ऑटोमेटिक AI आ गया है, या खुद से डिजाइन्स बन जा रही हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स में, तो डिजाइनर्स क्या करेंगे. बट आई वुड लाइक टू से हियर कि उनको भी डेवलप करने के लिए डिजाइनर्स लगते हैं, नंबर वन. एंड देन as I'm discussing even in this session, you saw we were discussing strategic approach yani ideation, like the contrast thing which we discussed over here is a very strategic design approach. जो aesthetics, जैसे आप किस तरह एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो, वो स्किल आप में डेवलप करनी बहुत जरूरी है एज अ डिजाइनर. एंड फॉर मास मीडिया professionals, those who are into getting into graphic design, understand problem solving. How are you solving your client's problem, and how is your design helping your client sell their product or service better? So अगर आपने वो strategy सीख ली, then this graphic design is a skill जो आप उस purpose को meet करने के लिए use करोगे. So understand the end purpose. For those who can understand this end purpose and develop themselves in that, they will be good problem solving designers, and for them the future is bright. Yes, so I'm sure that everyone in the room will be the problem solvers. Yes, and now I have boom of questions coming up. Okay, let's take it. Firstly, I'll filter out the questions on the software, that if there's a trial version, there's a student version. And now I think I should move one by one with the questions coming, like, is it necessary? I have read one question. This is a very basic question. I think you have already answered it during your conversation in the last, but I'll still ask it. Indrani Mukherjee wants to know, is graphic designing only for making logos, or we can do something else with it as well? So much. So tomorrow we have the application. I would be, if is it possible if I can show all the applications tomorrow? Like, because Yeah. it's not just for designing logos. I mean,
you see all around you. You can see this slide completely. How is it designed? जिस PDF को मैं use कर रहा हूँ ये open करने के लिए वो भी designed है. In designing interfaces, designing the backdrop that you can see behind Pusha is a design. So it's not just for designing a logo, it is for designing anything and everything that you want graphically, digitally. Yeah, and Even print your design में तो इस Facebook, color applications हैं. So even tomorrow your maybe I can address them better. Yeah. I think even the social media that we keep on scrolling the entire day, that has all the graphic design things are there Everywhere. everywhere. It's Everywhere. everywhere. And what uh, there's one more. Gauri Malhotra, how important is it to understand all the elements and principles of graphic design? Very much necessary. All the principles and elements are necessary. Not a single one should be skipped, because subconsciously while you will be designing, like this may be complicated for those who are really starting out, but yeah, for those who are designing, if you don't know proportion and just know contrast, how your design will reflect that. आपके design में वो mess दिखेगा. इसलिए I started with what does a bad design look like. If you saw my first slide. So कहीं ना कहीं अगर आपको सारे एलिमेंट्स और नहीं पता होंगे एस्थेटिक्स तो यू वोंट बी एबल टू डिलीवर बेटर आउटपुट. इट्स नॉट अबाउट द टूल्स एज आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग. So yes, it is So important to coming, understand all of them. Now to understand all of them, it's a different session in itself to make you guys understand what are aesthetics like. Yeah. so that will be covered in day 2 and day 3 of this workshop. A little gist, yeah. Yeah. Okay. Great. Varun Seni is asking, sir, I've done internship from India News and I have learned the basic editing like KinMaster doing editing of sports and Canva makes a sport thumbnail. Is it going to support Varun in future? Level up, Varun. Like if you can level up when it comes to Adobe Illustrator and Photoshop, it will help you more. As far as softwares are concerned, and Canva is good, but Canva is for some quick. But if you really want to go in depth, Canva may or may not help you. So yeah, Canva's purpose is to for those who are laymen and not graphic men, how they can do it themselves by using some ready templates and tools. But as a designer, your job is also to help someone differentiate themselves in the marketplace. Differentiate themselves, matlab, if there are three things, तीनों के अगर मैं कैनवा यूज कर रहा हूँ तीनों के लिए सेम टेम्पलेट यूज कर रहा हूँ तो पर्सन ए विल बी लाइक कि यार आपने पर्सन बी के लिए भी वही डिजाइन की, पर्सन बी विल बी लाइक पर्सन सी के लिए भी आपने वही डिजाइन की. तो एज ए डिजाइनर आपकी क्रिएटिविटी, आप किस तरह डिफरेंट आइडियाज दे पा रहे हो डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, वो आपका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है. So yes, please level up in Photoshop and Adobe Illustrator softwares and learn this aesthetics and design elements and principles which we are discussing about. Okay, and how important is graphic tablet or Illustrator? Yash Suryal. For now, very much, because everything is digital. You can be a good content creator online on your own. You can start your own Instagram page where you can start doing illustrations of maybe good influencers या बड़े create content creators जो दूसरे हैं, या आप अपनी खुद की comic series भी start कर सकते हो through using pen tablets and sketching on paper and then scanning it maybe in Photoshop and then using pen tablet to do that. Very much important, and you should use pen tablet only now on is what I suggest, because getting digital is important now. Only then you will be able to distribute your art. Like distribution is also important, right? You develop something on pen and paper and pencil, it's fine, but how will you distribute? So you need to go digital and figure out and you have distribution is in your hands now. Using Instagram, you can altogether create your own illustration shop over there. Okay, great. I think it's M. Pandhare. He's saying nice explanation. Lakshmi Pandey, Jugal, and Dr. Deepak Jain and Ronit Singh is saying, sir, I have tried making logos, but not at a high level. So he's learning and he wants to learn from you. देखो सर, हाई लेवल और लो लेवल ऐसा कुछ नहीं होता. Until and unless लोगो आपका जो है, कल इस पर और बढ़िया बात करेंगे, लोगो तक पहुंचेंगे, बट आपका लोगो should be very simple.
it should not be complicated. Anything which is complicated is not a good design. And वो logo जो है कुछ ना कुछ thought या message deliver करना चाहिए. Like if you can see Vidya Dan over here, it's communicating a message of Vidya, knowledge, education. So it is not just for the sake of it. So any dozo, any logo that you are doing does, should solve this purpose of communicating, nothing else. तो clean रखो, लॉन्जिटिविटी होनी चाहिए उसमें, मतलब आज भी देख रहे हो 10 साल बाद भी देख रहे हो तो आप बोर नहीं होने चाहिए. So कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे while you are designing a logo. So ऐसा कोई लो लेवल हाई लेवल नहीं होता, but yes, you have to be strategically sound. And in strategy I'll use one word. You should know how to understand the client's brand personality and brand positioning. ये अपने आप में कुछ subjects हैं, but then visual design आता है. पहले ये सब strategy solve करनी होती है. Yeah. Okay, so I'll take two more questions now, the last two questions. One, let's take it from Ashwini Gambhir, which is the best software to design a movie poster for commercial purpose promotion? People use Adobe Photoshop because only then you can manipulate and do a lot of editing in that. And yes, so it's the combination of Illustrator and Photoshop. And ये दोनों सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, बाय द वे. मतलब दोनों एक ही कंपनी के हैं एंड कॉम्बिनेशन में इसमें काम होता है. जो टाइपोग्राफी या वेक्टर रिलेटेड काम होगा वो आप जैसे अगर उसमें मैं हीरो हूँ फॉर एग्जांपल, कंसिडर मत करियो, बट या अगर मैं हीरो हूँ तो मुझे अगर एडिट करना है तो मुझे फोटोशॉप में कर लो एडिट, एंड उसके ऊपर अगर आपको कुछ टाइपोग्राफी लिखनी है जैसे लोगो से लोगो तक, तो वो आपको इलस्ट्रेटर में कंपोज करना पड़ेगा. देन यू हैव टू क्लब बोथ एंड पुट इफेक्ट्स ऑन द फोटोशॉप. सो फोटोशॉप विल गिव यू द फाइनल रेंडर. वैसे मेजरली फोटोशॉप का काम ज्यादा होगा इसमें. And then, yeah, that's that. So I guess Photoshop helps as far as I see. Okay, there is Neetu. She's saying, is it necessary that if we are a graphic designer, we should know about the process of offset, or graphic designing and offset is totally different thing? Not necessary. No, it's not mandatory, I would say, but the knowledge always helps. So offset printing, I hope you are talking about when it comes to. So yeah. That knowledge will help you, because while you are delivering the files for print, आपको वो एक पता रहेगा कि मुझे मेरे प्रिंटर को फाइल किस तरह देनी है. For now I can only say you selection of right colors for your client, और जो भी आप काम कर रहे हो, CMYK मतलब cyan magenta yellow black जो होता है CMYK, उस फाइल फॉर्मेट में आप अपने प्रिंटर को फाइल डिलीवर करो. एंड किस तरह स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए अलग थोड़ा ब्रेक करके देना पड़ता है ग्राफिक्स. सो यस, you should not necessarily know in depth about offset, but you should at least know how to submit files for printing, be it offset, be it screen printing, so that as a designer you are equipped. क्योंकि ultimately वो स्क्रीन से कहीं ना कहीं तो प्रिंट होगा ना, तो आपको फाइल कैसे सबमिट करनी होती है वो नॉलेज आपको होनी चाहिए. ऑफसेट की एकदम इन डेप्थ ना हो तो भी चले, बट ऑफ कोर्स नॉलेज विल ऑलवेज हेल्प. व्हाई नॉट? You should study. You want to take one more question? Yeah, I'm fine. Yeah. Okay. I can. Absolutely. Okay. So let's take it from Rajat Sisodia. He's saying, can you give a real life example where we see graphic design solving a problem in our daily life? A real life example of? Where graphic designing is solving the problems. Was I able to communicate the message clearly to everyone? I'm answering the question only. Just type Y in the chat box अगर आज के सेशन में सारा communication सही तरह से आपको deliver हुआ, and क्या आपकी problem solve हुई कि what is graphic design all about थोड़ा बहुत. And I've used graphic design in this screens. Real life example दे रहा हूँ, सामने आपने अभी experience किया है कि मैंने graphic design की skills use करके ये presentation बनाई, मेरे message को मेरी target audience तक मैंने सही तरह डिलीवर किया. एंड आई एम गेटिंग वाई इन द चैट बॉक्स. मतलब जस्ट टाइप PS I love you in the chat box if everybody loved this session. So you know, and you will have to love this software, man, if you really want to grow. Great. Now okay, just kidding, taking another example. आप चाहे कितनी भी ब्रांड्स देख लो, आप कभी भी प्रोडक्ट्स जो बाय कर रहे हो ना, आप उस प्रोडक्ट या सर्विस को बाय नहीं कर रहे हो, आप उसकी स्टोरी को बाय कर रहे हो. आप honestly, matlab, whenever you are buying something, you buy out of some emotional touch that you get with that product.
तो वो इमोशनल टच जो आपको आ रहा है ना उसकी विजुअल लैंग्वेज से, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, मैं अगर आपसे इंटरेक्ट करूंगा तो बेटर समझा पाऊंगा. बट आई होप I was able to explain this with this live example of this presentation. So live अभी ग्राफिक डिजाइन को यूज करके रियल लाइफ प्रॉब्लम अभी हमने एक सॉल्व करी है, जो था कि कुछ लोगों को डिजाइन के बारे में नहीं पता था, हमने उन तक मैसेज पहुंचाया यूजिंग ग्राफिक डिजाइन. Absolutely. And even अभी अनिल गगन ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, इन इंडिया जो दिखता है वो बिकता है. And this is possible only through graphic designing. बिल्कुल, इसलिए तो वो मिस्टर ब्रांड इंडिया वाला है, क्योंकि ये दिखेगा भी, बिकेगा भी और टिकेगा भी. सो इट्स लाइक दैट. सो मिस्टर इंडिया नहीं दिखता था. I want India to produce a lot of brands which are firstly national and then go global. So yes, MSMEs and all those entrepreneurs out there are now realizing the importance in using graphic design, visual communication, branding a lot to differentiate their product and make sure कि मेरे product का message सही तरह deliver हो मेरी audience तक. Absolutely. Even if you talk about your daily needs of butter, I'll say Amul ka jo that cartoon and the message that comes with every different box has a different message. I think that's how you connect to the audience, and that's how I think just an example of Amul, but many brands are coming up with the quotes, with a message, or even it was I think it was some soda drink, some soft drink which has come up with for father, for mother, something like that, right? Where you can connect, oh, this is for you, this is for me. So that's the power of designing. That's the power of graphics. Utterly, utterly delicious. Absolutely. I think, guys, we have taken a lot of questions, and we still have 2 days for learning from this gentleman, Vivek, Mr. Vivek Hiralal ji, and he'll be answering questions with full of energy, and he's been I mean, for me, it has been really a learning session. I have done the introduction part. Now let's move to the session tomorrow, where we will learn about application softwares, and day 3 with the career and opportunities in graphic designing. Absolutely. I hope with this 3-day workshop you'll be able to come up with more solutions for life, maybe in social media, in real life, because graphic designing is one field. Just we talk about media and entertainment. Media and entertainment is one field which is not going to go down. Entertainment is a need of not just this hour, it's a need of all the times. And similarly, graphic ke bina, I think whatever you see around is 99% of the graphic that's designed by these super people. So with this, I'd like to thank Vivek ji for spending his time with us on the Creative Warrior programs, and to the lovely audience for being so interactive and so energetic throughout the session that we didn't realize that the session has come to an end. So let's meet tomorrow 11:30 and start learning about the applications. Okay, till then, take care, stay safe. You can watch the session again on Media and Entertainment Skills Council YouTube channel if you want. And yes, share it with your friends, like, subscribe to our channel, and stay safe. Take care, don't go out. Corona is spreading. Stay safe. Bye-bye. Bye guys, thank you so much.